मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि ओबेसिटी क्या होती है, यानी वो मोटापा जो हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। That I was suffering from a disease which is called insulin resistance, which leads to obesity. You will be surprised that I would say without a doubt that about 88 to 90% of our country's population and mostly all over the world also, everybody has a fatty liver. पहली चीज जो हमें याद रखनी चाहिए that all human beings are different. सोचा जाता है कि मोटापा आपको ज्यादा खाने की वजह से और आप में वो हिम्मत नहीं है कंट्रोल करने की और आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप सुस्त हो, आपकी विल पावर नहीं, ये गलत है। इवन कोई मुझसे भी पूछते तो मैं कहती हूँ ये मेरा जवाब होता है। या अच्छा, अब जिनको ये बीमारी है, ओबेसिटी की बीमारी है, दिस इज अ डिजीज, खतरनाक हद तक जो मोटा है उसको तो डिटरमिन एक डॉक्टर नहीं करता। नो एथिकल डॉक्टर इज गोइंग टू स्टार्ट विद द वेट। इनके जब आप टेस्ट्स करवाते हो और इन्वेस्टिगेशंस करते हो तो इट टर्न्स आउट दैट दे हैव फैटी लिवर्स and this is called a non-alcoholic fatty liver. If you suffer from obesity, so one of the main things is that you have to look at a person's genetics. उसकी hereditary history को देखो। आपको कैसे पता चलता है कि अब you need intervention? This is whatever is happening inside is going to constantly give signals to your body that you're not eating right. अब आते हैं हम वो miraculous drugs की तरफ, इलाज की तरफ, जो कि टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत मुफीद है।